अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील अहमद, आपका फिजिक्स टीचर द लर्निंग कॉन्सेप्ट एकेडमी से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्क डन इन अ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। प्रीवियसली हम लोग वर्क डन के बारे में जो है वो स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स और वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स जो है वो स्टडी किया था। आज हम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो है वो वर्क डन को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द रीजन सराउंडिंग द अर्थ वेयर ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ मैस। मतलब ये रीजन है जमीन के गिर्द जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इसकी अट्रैक्शन को जो है वो फील करता है। It's a force field that extends in all directions. Its strength decreases with the increase in distance from the earth center. मतलब कि इस ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ से दूर होते जाएं तो इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। The acceleration due to gravity denoted by g with approximately 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर at the surface of the earth। मतलब कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जमीन जब किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो इट इज अट्रैक्टेड विद द एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं जी वर्क डन इन अ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज बीइंग डिस्प्लेस्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी from point A to point C along various paths इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसको कंसिडर कर रहे हैं और उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पॉइंट A से पॉइंट C तक जो है वो डिस्प्लेस करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम वर्क डन को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हम तीन डिफरेंट पाथ जो है वो कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें एक पाथ है हमारा जी पाथ ABC एंड द पाथ ADC एंड द पाथ A to C. In this case, the gravitational force is equal to the weight mg of the object. First of all, we will calculate the work done along the path 1. Let's say ABC is our first path. The work done along the path ABC, that is work done ABC by the gravitational force along the path ABC, can be split into two parts, that is the work done A to B and the work done B to C. And the final work done that we will get will be equal to the sum of these two work done. The work done A to B is 0 because the weight mg is perpendicular to this weight. During the displacement from A to B, the force of gravity will be perpendicular to the displacement, so the work done will be 0 along the path AB. Now the work done from B to C is equal to minus mg, the negative sign due to the fact that the mg is opposite to the displacement. जब हम B से C की तरफ जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपवर्ड है, ग्रेविटेशनल पुल जो है वो डाउनवर्ड है, तो इस लिहाज से दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 180 डिग्री होगा। then the work done from B to C will be minus mgh. Thus the equation 1 will becomes work done ABC will be equal to 0 minus mg, that is equal to minus mg. Now we will calculate the work done along the path 2, that is ADC. The work done along the path AD will be equal to minus mgh, as same situation is here. The displacement and the force of gravity are opposite to each other, so the angle will again 180 degree, so the work done will be negative. And the work done along the path DC is WDC, that is equal to 0. The same situation, the displacement and the force of gravity are perpendicular to each other. Therefore, the work done ADC will be equal to work done A to D plus work done D to C will be equal to minus mg plus 0, that is equal to minus mgh. Now, we will calculate the work done along the path 3. To find the work done along the curved path, we divide it into series of horizontal and vertical steps as shown in figure. There is no work done along the horizontal steps because mg is perpendicular to the displacement for these steps. यानी कि अगर आप देखें तो इस सिचुएशन में हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के अलोंग जो फोर्स है दैट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, सो द वर्क डन अलोंग दीज स्टेप्स विल बी 0.
The work done by the force of gravity along the vertical displacement will be WAC is equal to minus mg delta y1 minus mg delta y2 minus mg delta y3 अप टू सोन माइनस एम जी डेल्टा वाई एन। यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के अलोंग अगर हम वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं, इन दैट केस जो वर्टिकल स्टेप्स हैं और जो ग्रेविटेशनल पुल है उन दोनों में जो एंगल होगा सेम उसी तरह से 180 डिग्री होगा। तो अलोंग द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आपका जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। इट्स मीन कि हमारा जो टोटल वर्क डन होगा इन तमाम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के अलोंग वर्क डन के या वर्टिकल स्टेप्स के अलोंग वर्क डन के सम के बराबर होगा। इन दैट केस यहाँ से हम माइनस एम जी जो है वो कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के अंदर जो है वो सम ऑफ ऑल द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो इन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का सम जो होगा हमारी हाइट के जो है वो बराबर होगा। देयरफॉर द वर्क डन ए टू सी विल बिकम माइनस एम जी एच। Thus, from equation 2, 3 and 4, it is proved that the work done in the Earth's gravitational field is independent of the path followed. Next हम इस चीज को शो करते हैं कि work done in a closed path in the gravitational field is what? Consider an object of mass m being displaced with constant velocity along the path A, B, C, D, A in the presence of the gravitational force. In this case, the gravitational force is equal to the weight mg of the object. The work done along this closed path A, B, C, D, A will be work done A, B, C, D, A will be equal to work done A to B plus work done B to C plus work done C to D plus work done D to A. It means अब हमें इन चारों पाथ्स के अलोंग जो है वो वर्क डन कैलकुलेट करना है। द वर्क डन ए टू बी एंड सी टू डी is 0 because weight mg is perpendicular to displacement along these path। मतलब कि A से B जाते हुए और C से D जाते हुए जो ग्रेविटेशनल पुल है वो दोनों सिचुएशन में परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट है। तो इन दैट केस द वर्क डन विल बी 0 along these path by the gravitational field। The work done B to C will be equal to minus mgh। अगर आप इसको देखें तो B से C की तरफ जाते हुए वेट या ग्रेविटेशनल पुल जो है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन दैट केस हमारा जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। द वर्क डन अलोंग द पाथ DA इज WDA इज इक्वल टू mgh। इन दैट केस अगर आप देखें तो अगर हम D से A आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल पुल जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के दरमियान एंगल 0 होगा और वर्क डन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने चारों पाथ के अलोंग वर्क डन को कैलकुलेट कर लिया है, तो इन दैट केस हमारा जो टोटल वर्क डन होगा इन तमाम वर्क डन का सम होगा। तो जब हम इसको सम अप करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आंसर आता है वो 0 आता है। सो द वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0, हेंस द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। अब अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए हमने दो चीजें जो यहाँ पे प्रूव की हैं। एक ये कि वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, एंड द सेकेंडली द वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0। ऐसी फील्ड जिसमें वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड हो और वर्क डन इन अ क्लोज पाथ 0 हो उसको हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो ये था जी वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो लेक्चर की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाली हर वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।